Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing your books number 7 and here this is your English grammar book and the name of the book is English Grammar Plus Skills Unleashed Workbook. So children, today we are going to do chapter number 12 of your book and the name of the chapter is Active and Passive Voice. So let's start with the chapter. So children, in the active voice, the subject of the sentence is the doer of the action. So active voice में जो subject होता है sentence का, जो subject होता है वो action का doer होता है, means वो action को करता है. The subject acts here. And the subject acts, hence active. So यहाँ पे जो subject है हमारा active है क्योंकि वो work को कर रहा है. Now in the passive voice, the subject is the receiver of the action. So यहाँ पे जो passive voice की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा subject होता है वो receiver होता है, action का receiver होता है. The subject does not act here, hence it is passive. यहाँ पे subject जो है work नहीं करता है इसलिए उसे passive कहा गया है. Now see the following sentences in the active voice have been changed into the passive voice without changing the meaning. So यहाँ पे कुछ sentence दिए गए हैं, इन्हें active voice में है, इन्हें we have changed in these into passive voice without changing their meaning. इनकी meaning को बिना बदले हमने इन्हें passive voice में change कर दिया है. For example, the first sentence is the captain called the players. कैप्टन ने प्लेयर्स को बुलाया. कैप्टन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब वो क्या काम कर रहा है, बुलाने का काम कर रहा है. सो दिस इज एन एक्टिव वॉइस. अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया, द प्लेयर्स वर कॉल्ड बाय द कैप्टन. अब कैप्टन जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो चला गया लास्ट में, रिसीवर की जगह पे चला गया, वो रिसीवर बन गया एक्शन का. सो और जो प्लेयर हमारे ऑब्जेक्ट के प्लेस में वो हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे चले गए. सो क्या बन गया, द प्लेयर्स वर कॉल्ड बाय द कैप्टन. सिमिलरली ही इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट. ये एक्टिव वॉइस में है. अब ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चला जाएगा लास्ट में और क्या बन जाएगा, हिम. अ पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड बाय हिम. नाउ चेंजिंग सेंटेंसेस इन डिफरेंट टेंसेस इनटू पैसेज. सो कई सारे सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें हम पैसेज में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट में कोई सेंटेंस दिया उसे कैसे चेंज करना है. सो इन द पैसिव फॉर्म द फॉर्मूला दैट वी अप्लाई हियर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की. सो हियर सेंटेंस दिया है आई ड्रॉ पिक्चर्स. सो आई क्या था, हमारा सब्जेक्ट था. अब वो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे. तो पिक्चर्स कहाँ गए, सब्जेक्ट की प्लेस पे. सो क्या हो जाएगा, पिक्चर्स आर ड्रॉन बाय मी. अब आई के लिए हम क्या यूज करते हैं, मी यूज करते हैं. सो पिक्चर्स आर ड्रॉन बाय मी. सेकेंड वन इज दे लाइक दिस मूवी. अब क्या है, दिस मूवी जो चले जाएगा सब्जेक्ट की दिस में. सो दिस मूवी इज लाइक्ड बाय देम. लाइक का क्या बन गया, लाइक, क्योंकि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, लेट्स सी. अब इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगानी है एंड देन ऑब्जेक्ट लिखना है. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन हियर इज शी इज फीडिंग द काउस. अब काउस चले जाएंगे शी की जगह पे और शी चले जाएगा उसकी जगह पे, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे. सो द काउस आर. अब बहुत सारी काउ हैं इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया. सो द काउस आर बीइंग फेड. फीडिंग का बन गया फेड, फेड बाय हर. नेक्स्ट एक्टिव वॉइस में मीना इज रीडिंग अ नॉवल. अब अ नॉवल चला गया मीना की प्लेस पे. सो क्या बनेगा, अ नॉवल.
अब एक नॉवल इसलिए हमने यहाँ पे लगा is. A novel is being read by Meena. Next, present perfect tense. So in this, the formula is subject plus has or have plus been plus verb की third form, then by and then object. So here the sentence is we have washed the floor. So अब जो है क्या करना है, the floor has been, क्योंकि एक floor है, so the floor has been washed by us. Similarly, the next sentence is he has helped me. So I have been helped by him. Next, into the past tense. So past tense में अब कौन से हमें करने हैं? Let's see. First comes the simple past. Subject, then was verb plus verb की third form, by and object. So Anil bought a new car. अब क्या हो जाएगा? A new car was bought by Anil. The dog bit two girls. Two girls were bitten by the dog. Next, the past continuous tense. Subject plus was verb plus being plus verb की third form plus by and then object. So they were repairing the old cars. The old cars were being repaired by them. अब they का बन गया यहाँ पे them. She was cooking breakfast. The breakfast was being cooked by her. So this is a sentence that we are making in passive voice. Now the third one is past perfect. So past perfect में क्या करेंगे हम? Subject में हम had लगाएंगे, फिर been लगाएंगे, फिर verb की third form लगाएंगे, by लगाएंगे और object लगाएंगे. So here the examples are I had met him. So him जब जाएगा subject की place में तो क्या बन जाएगा? He. So he had been met by me. I का बन गया me. Tom had given me the book. I had been given the book by Tom. Next, in the future tense में अब हम simple future में क्या करेंगे? Subject के साथ shall or will, be, then verb की third form, by and object. So he will inform me. I shall be informed by him. Active voice में है I shall send him. He will be sent by me. Next, in the future perfect, subject plus shall, will, have plus been plus verb की third form plus by plus object. So active voice में क्या है? She will have helped me. So अब me की जगह क्या हो जाएगा? I shall have been helped by her. Shiny will have won the test. तो अब the test आ जाएगा Shiny की जगह पे. The test will have been won by Shiny. So these were some examples, children. On the basis of those examples, we have to complete these exercises. So the first exercise is A exercise. The following sentences are in active voice. So sentence active voice में दिए गए हैं, हमें इन्हें passive में convert करना है. So first one is here. The captain hit the ball early. The ball was hit early by the captain. So children, like this, you have to convert the given exercise into passive voice as we have read in the book. So these all are your homework. Now let's do use of being in passive voice. Being का क्या use है passive voice में? Let's see. In continuous tense, the ing form of the verb is used. So जब continuous tense में बात हम करते हैं तो हम जो है ing form को use करते हैं. The ing is changed into being in the passive. So as ing को हम जब passive voice में convert करते हैं तो वो क्या बन जाता है? Being बन जाता है. For example, the teacher is teaching grammar. तो अब grammar क्या आ जाएगा? Starting में grammar is being taught by the teacher. Teach का बन जाएगा teaching का बन जाएगा taught. Because we are using the verb की third form. She is singing a song. A song is being sung by her. Now in the following sentences, have plus ing form of the verb is given.
Now change them into the passive voice. Nagendra was watering the plants. The plants were being watered by Nagendra. The farmer is plowing the field. The field is being plowed by the farmer. So like this, children, you have to complete the rest of the exercise that is given to you. So children, now we are going to learn the use of been in passive. Been का क्या use है passive voice में? Let's see. In perfect tenses, been is used after has, have, had, will have, shall have in the passive. So perfect tense में been को हम use करते हैं इन सब के बाद. So here some examples are given. He had done the work had been done by her. I have passed the exam has been passed by me. She will have fed me. I shall have been fed by her. Now children, again here you have to complete the following sentences are in the perfect tense. You have to change them into the passive voice. You have kept your promise. Your promise has been kept by you. So like the first one is done. Rest of the questions are your homework and you have to do on your own. Next is changing interrogative sentences into passive. Interrogative sentences को passive में कैसे convert करना है? Interrogative sentence क्या होते हैं जो क्या करते हैं? Questions पूछते हैं. So ऐसे sentence को हमें कैसे passive में करना है? It may be a bit confusing for you to change an interrogative sentence into passive voice. So आपके लिए थोड़ा बहुत confusing हो सकता है. To simplify the process, the first change the question into a statement. So हमें क्या करना है? Question को हमें statement में change करना है. Then change the statement into passive voice. अब statement को हमें passive voice में convert करना है. Finally, change the passive sentence back to an interrogative sentence. So ये सारी चीजें क्या करनी है हमें? So again I am going to repeat to simplify the process. First change the question into statement. जो question दिया गया उसको पहले statement बनाना है, simple सा sentence बनाना है. Then change the statement into passive voice. अब उस statement को हमें passive voice में convert करना है. Finally change the passive statement back into interrogative statement. अब उस passive statement को हमें question में convert करना है. So ये process हमें follow करना है. Then only we can change interrogative sentences into passive voice. So here children some example are given. Did you answer the question? अभी हमें क्या करना है? पहले से statement में convert करना है. फिर इसे हमें जो है passive voice में convert करना है. अब फिर passive voice के उसको जो है हमें जो है interrogative में convert करना है. So did you answer the question? The question were answered by you. अभी हमने इसको passive में convert कर रखा है. The question were answered by you. Statement क्या बना था इसका? You answered the question. और interrogative क्या बना था? Were the questions answered by you? So like this only children we have to do the exercise. The following are interrogative sentences and change them into passive voice. So ऐसे ही जैसे example दिया गया है ऐसे ही we have to do this exercise. So first question is done here. When will the driver stop the train? When will the train be stopped by the driver? So हमें when से ही question बनाना है. So similarly who designed a national flag? ऐसे ये जो second question है third, fourth, fifth and so on जो भी questions दिए गए हैं in this you have to change interrogative sentences को आपको passive voice में convert करना है. So this is also your homework children, you have to do on your own. Now changing imperative sentences into passive. Imperative sentence को passive में कैसे convert करना है? For changing an imperative sentence क्या होते हैं? जो किसी को command देते हैं, advice देते हैं, request करते हैं. तो ऐसे sentence को passive में करने के लिए क्या करना है? Is different from changing an interrogative or an assertive sentence. So ये अलग है इन दोनों को change करने से. जैसे इनको change करते हैं उससे बहुत ही अलग है. You can easily identify an imperative sentence because it usually begins with a full verb in the base form. So जो imperative sentence है वो अपने full verb के साथ शुरू होता है अपने base form. Imperative sentences are changed into the passive
in accordance with the meaning indicated in the situation. So इनको जब हम passive में change करते हैं उसकी meaning को ध्यान रखते हैं, उसके according we change it. You need to form suitable structures as per the requirement of the context. So जो भी इसका structure है उसको requirement के according हमें change करना है. So here the sentence is given respect your elders. Means हम क्या करें, suggestion दे रहे हैं किसी को कि respect करो अपने elders की. So elders should be respected by you. अब हमने इसको passive में convert कर दिया. Second one is open the window please. You are requested to open the window. Leave the class at once. You are ordered to leave the class at once. So easily हमने इसे पहचान लिया है, उसके according ही हमने sentences को convert किया है. Now the following are imperative sentences. You have to change them into passive voice and from suitable structures as per the requirement of the context one has been done. So stop making noise. You are ordered to stop making noise. Dress yourself properly before going to school. So children, as we have done the first, rest of the questions are your homework. You have to do on your own. So these questions you have to do on your own. Now the next topic that we are going to learn is, in some sentences in the passive, by and the noun or the noun phrase following it may not be necessary because it is either understood or not important. So कई sentences में जो हमारा जो by है वो कई बार understood होता है या फिर कई बार वो important नहीं होता. For example, the watchman has locked the door. अब यहाँ पे हमने by नहीं यूज किया है, हमने क्या किया है, पहला सेंटेंस था हमारा the watchman has locked the gate. तो अब इसका पैसिव क्या बनाया, the gate has been locked. सबको पता है कि लॉक करने का काम किसका है, वॉचमैन का. So here by the watchman is easily understood. The warden released the prisoner. The prisoner was released. So prisoner जो है रिलीज हो गया, किसके द्वारा, वार्डन के द्वारा, क्योंकि ये काम किसका है, वार्डन का है. So यहाँ पे by the warden नहीं लिखा गया है. अब here some sentences are given and we have to change these into passive voice. When will they call us? अब क्या लिखा है यहाँ पे, when shall we be called. अब they की जगह यहाँ पे them नहीं लिखा गया है क्योंकि it is easily understood कि when shall we be called, हमें कब बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस पर्सन को बुलाया जाएगा उसे पता है कि कौन बुलाने वाला है उसे. So like this children, you have to complete the rest of the exercise. It is a homework. Now change the verb in these sentences into active voice. So verb को हमें change करना active voice में, in sentences में. Make changes as required. The procession was led by the noted politician. So यहाँ पे children, यहाँ पे कुछ verb sentences दिए गए हैं. अभी तो हमने सारे sentences को passive में convert किया था. अभी यहाँ पे क्या करना है, passive sentences दिए गए, इन्हें हमें active voice में convert करना है. So this is your homework. You have to do on your own. Now given below are 6 pair of jumbled up sentences. So jumbled sentences दिए गए हैं. The verb in one sentence in each pair is in the active voice. So इसका जो verb है हर sentence में active voice में है, while the other is in the passive voice. बाकी जो दूसरा है वो passive voice में है. Rearrange them to form meaningful sentences and write down if they are in active or passive voice. Follow the example. So first children, first one is done here. The bone chewed dog, the dog chewed the bone. So ये active voice में है. अब हमें क्या करना है, जो दूसरा दिया गया है वो passive में करना है. तो देखो कैसे लिखा है, was chewed by the bone, the dog. So the bone was chewed by the dog. So I think this is very easy exercise. You will do it very well. So अभी आपने जो दूसरा था उसे आपने passive में convert कर दिया. Similarly आपको ये जितने भी sentence दिए गए हैं first को active में और second को passive में convert करना है. So this is also your homework. Now rewrite this passage in the passive voice. So passage दिया गया है active voice में है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है and then you have to convert this passage into the passive voice. So this is also your homework. So I hope
children that you have understood easily the chapter active and passive voice. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay with me.